Hello friends, I am Rajinder Jatana, your maths teacher here. I have come up with my notes on substitution method, that is method 4. Look here, on the left hand side you are having the mnemonic. That mnemonic reads GEMS, graphical method, elimination method, multiplication method, substitution method. Now it is the turn of substitution method. The videos for the first three I have already uploaded. Now I am coming to the fourth one. So in this method you will be given the pair of linear equation in two variables. Now look here, I have made two pockets, and these pockets indicate equation number 1, equation number 2. Pocket number 1 is equation number 1, that is a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Pocket 2 में है a2x plus b2y plus c2 equal to 0. अब देखिए, एक पॉकेट से निकालना है, दूसरे पॉकेट में डालना है. अब देखो मैंने x निकाल रखा है फर्स्ट इक्वेशन से. x की वैल्यू निकली है माइनस b1y प्लस c1 ओवर a1. यही वैल्यू x की आप सेकंड इक्वेशन में डाल दो. देन you will find the value of y and substitute the value of y. With the help of example number 1, look here, there are two equations, there are two pockets. First pocket is 2x plus 3y equal to 5. Second pocket is 5x plus 7y equal to 12. Now from the first pocket find the value of x. It will be 5 minus 3y by 2. Substitute it in the second pocket, that is 5x. x की वैल्यू हमने निकाल ली है स्टेप 1 में, that is 5 minus 3y over 2. वो आप सेकेंड वाली इक्वेशन में डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, and you will find the value of y and value of x. Value of y is 1, value of x is also 1. Now we will go to other examples so that your this concept is clear to you. I am coming to the next examples 2 and 3. Look here. This is example number 2 and example number 3. Now, in the example number 2, you find it is 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2. This is the first pocket. Second pocket is x by 3 plus y by 2 equal to 13 by 6. ये दो इक्वेशन दी हुई हैं. What we will do, we will firstly get rid of the denominators. पहले इसका एलसीएम लेके इसको सीधी कर लीजिए. So after taking the LCM, the equation becomes 9x minus 10y equal to minus 12, 2x plus 3y equal to 13. दो इक्वेशन बन गई हैं. अब दो पॉकेट हमारे सामने हैं. एक पॉकेट से हमने y की वैल्यू निकाल ली, फर्स्ट पॉकेट से वो निकली है 9x प्लस 12 ओवर 10. सेकेंड पॉकेट में डाल दो. सेकेंड पॉकेट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 13. यहाँ पे y की वैल्यू लगा दो. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 3. सिमिलरली, नाउ देयर आर टू इक्वेशंस गिवन टू यू, that is 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24.
So these two equations are given to you. You find the value of x from the first and put it in the second. You will get the value of x is equal to -2 and y equal to 3. So y equal to 5. So now you know the value of x and y. What you are supposed to find out is, hence find the value of m for which y is equal to mx plus 5, mx plus 3. अब आप लगा दीजिए, x और y की वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू निकल आएगी. So the value of m will work out after putting the value of x and y. So this is quite simple. एक पॉकेट से माल निकालो, दूसरे पॉकेट में डाल दो. Very simple. So with this, the chapter on linear equation in two variables is over. Then we'll going ahead with the next chapter. Thank you very much. I request you to give your comments. मेरे को मालूम तो पड़ना चाहिए आपको समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम है या आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप दे दीजिए. एंड इफ़ यू रियली फाइंड के मेरे लेक्चर्स आपको ठीक लग रहे हैं तो यू डोंट हेजिटेट टू appreciate so that I feel motivated. Share this with your friends, like the videos and subscribe. Thank you very much. Good night. God bless you. Bye.